Hello all, I welcome you on my YouTube channel French and English Blends. Today I'll be discussing quelques locutions, some phrases or connectors in French. So let's start. First one is au cas où, de le cas où. Au cas où, de le cas où. It means in case. Whenever in a sentence we have to give the sense of in case, if ever, si jamais, then we'll be taking the help of this connector au cas où. But keep in mind to always use conditional présent along with it in a sentence. Let's check a sentence to get the clarity over it. Je te laisse mon numéro au cas où tu ne viendrais pas. Je te laisse mon numéro au cas où tu ne viendrais pas. It means I'm giving you my number in case you don't show up. अगर किसी फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से तुम नहीं आ पाते हो तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ या दे रहा हूँ. तो ये जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है इसको आप इन केस के साथ you'll be using in English and in French au cas où with the help of this connector. Here this viendre verb, venir verb है, उसका viendre formation है जो कि conditional présent है. So I'll be making a separate video in detail about all the rules of this conditional présent, but for the time being it's very important for you guys to understand the rules, which connector follows which rule. So here let's check another sentence. De le cas où l'on aurait besoin de moi, je me trouve dans la garage pour toute l'après-midi. De le cas où l'on aurait besoin de moi, je me trouve dans la garage pour toute l'après-midi. It means in case you need me, I am in the garage all afternoon. In case you need me, I am in the garage all afternoon. अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मैं पूरी दोपहर गराज में हूँ, वहाँ पे आके तुम मुझसे मिल सकते हो. So here in case usage is there in English as well as in French sentences. So what you guys have learned here, you have learned that whenever there is a in case sense, you have to use au cas où and with conditional présent, because here with in this sentence this aurait, which is avoir verb. So this aurait is conditional présent version. So we'll be discussing it later. And so this were the rule for au cas où. Next is même si. Même si, it means even if. And même si always uses indicative version. What is indicative? Indicative means the conjugation of the verbs as per the tenses, like présent, passé composé, futur simple, pluscuparfait. So the one thing more with même si, you always have to, some opposition should always be there. So like some contradictory thing should be there. Like let's check a sentence. Même si je n'avais les moyens, je n'irai pas à Paris. C'est une ville trop touristique. Même si je n'avais les moyens, je n'irai pas à Paris. C'est une ville trop touristique. What it means? Even if I had the financial means, I wouldn't go to Paris. It's a heavily touristic city. तो अगर मेरे पास पैसे होते भी तो भी मैं पेरिस नहीं जाती. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है कि और तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. मैं एक और सेंटेंस देती हूँ जिससे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी, which is même s'il est un peu bizarre, il est très gentil. Même s'il est un peu bizarre, il est très gentil. Even though
ही इज़ अ लिटिल वियर्ड, ही इज़ वेरी नाइस। तो वो वियर्ड भी है और साथ में नाइस भी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ जाती है। पेरिस हमें नहीं जाना है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि पेरिस पैसे होते तो भी मैं पेरिस नहीं जाती, तो क्या फ़ायदा है सेंटेंस को बोलने का? एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है यहाँ पे। सो वेन एवर देर इज़ अ अपोजिशन इन अ सेंटेंस, ऑलवेज यूज मेम सी विद इंडिकेटिव, एंड द मीनिंग ऑफ मेम सी इज इवन दो और इवन इफ। Next, the next connector is so and awake. Awake and so, we always use it with nom. Nom here means noun. So noun version should be there. And the usage is with or without. Awake dalarjo on patu fair. Avec de l'argent, on peut tout faire. It means with money, one can do anything. So here, on usage is there, which will be discussing later in my other videos. The on version, which we use for people, we, they. But for the time being, it's important for you to focus on the connector, which is with. With money, one can do anything. So, avec de l'argent, on peut tout faire. Next, tu aurais pu réussir sans tricher. Tu aurais pu réussir sans tricher. Tricher here means cheating. Réussir is to pass. So you could have cleared or passed without cheating. Here, without, for without, we are using so in French, and this aurait pu is the usage of conditionnel passé. We'll be discussing later in my other videos. This, whenever, just remember this thing, that this conditional passé, we use it when we want to express what would have taken place in the past had some other action, event or situation occurred. So whenever you are in need of could have, should have, would have, you guys be using conditional passé.